Today's lecture will discuss about pancreas and the two hormones insulin and glucagon produced by it and how they control blood sugar level. Pancreas एक important organ है which is present in upper abdomen in horizontal position and it's behind the stomach. Pancreas जो है it produces digestive enzymes which helps in digestion of food. Also it produces hormones like insulin and glucagon which helps in blood sugar regulation. तो ये जो आपका जो digestive enzymes हैं these are produced by duct glands and thus it's acting as a exocrine gland. और जो आपके hormones हैं those are produced by ductless glands or endocrine glands. तो pancreas act both as exocrine and endocrine and thus we call it heterocrine gland or mixed gland. Our body always maintain a certain level of glucose in the blood which acts as a ready supply of energy to the cells. तो आप खाना खा रहे हैं या फास्टिंग पर हैं, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है दैट्स कॉन्टिन्यूसली सप्लाइंग एनर्जी टू द सेल्स. ऑल्सो इट्स रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड फॉर मसल एक्टिविटी. तो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर कॉन्टिन्यूस इफेक्टिव वर्किंग ऑफ बॉडी. बट एट सेम टाइम जो ब्लड जो शुगर लेवल है दैट शुड बी इन अ हेल्दी रेंज. अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है या शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, दोनों ही अनहेल्दी कंडीशंस हैं. सो हाई शुगर लेवल दैट्स अ हाइपरग्लिसीमिया एंड लो शुगर लेवल इज हाइपोग्लिसीमिया. तो ये जो शुगर लेवल मेंटेन करने का काम है दैट वर्क इज ऑफ पेनक्रियास. तो पेनक्रियास रेगुलेट दिस ब्लड शुगर लेवल in the blood with the help of hormones like insulin and glucagon. So prior meal, the healthy level of glucose in blood is 90 mg per 100 milliliter of blood. When we eat food, तो ग्लूकोज का ये लेवल जो है इट राइजेस. पेनक्रियास ट्रैक दैट एंड इन रिस्पॉन्स पेनक्रियास रिलीज इंसुलिन. तो ये जो इंसुलिन रिलीज हुआ है इसका जो प्राइम फंक्शन है इट टेल्स ऑल द सेल्स स्पेशली द मसल सेल्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, प्लीज एब्जॉर्ब दिस ग्लूकोज. एडिशनली वो जो लीवर है उसको भी वो मैसेज दे रहा है कि जो ग्लूकोज है उसको यू कैन कन्वर्ट एंड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है. थर्ड इज क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है तो इंसुलिन जो है जो एडिपोज टिश्यू है जो फैट सेल्स हैं उनको मैसेज दे रहा है कि यू डोंट ब्रेक एनी फैट सेल्स और यू डोंट ब्रेक एनी फैटी एसिड्स एंड यू कैन इनफैक्ट स्टोर द फैटी एसिड विच इज देयर. अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस ही ना हो या फिर इंसुलिन का जो एक्शन है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल विल इंक्रीज. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरग्लिसीमिया एंड दिस पर्टिकुलर क्रॉनिक डिसऑर्डर इज व्हाट वी कॉल एज डायबिटीज. तो दिस डायबिटीज कैन रिजल्ट इन two ways. One is when there is no insulin production is there, that's called as type 1 diabetes. So in case अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है पेनक्रियास के बीटा सेल्स, वो सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है देन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंसुलिन एट ऑल. तो उस केस में जो है पर्सन नीड्स अ कॉन्स्टेंट इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन. द अदर वन इज जहाँ पर पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहा है बट जो बॉडी के सेल हैं वो उस इंसुलिन पर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज. पेनक्रियास नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है बट सेल उतना ग्लूकोज जो है इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट दिस सेकेंड कंडीशन वेयर द इंसुलिन एक्शन इज नॉट दैट इफेक्टिव, then that condition is called as type 2 diabetes. तो type 2 diabetes में usually if a person is habitual of eating lot of sugar, sweets
then the pancreas is constantly producing insulin, and it's telling continuously to the cell to absorb glucose. And at some point, some stage, at age of 30, 35, 40, 45, the body cell stops responding effectively to the insulin instruction. So for that person, that type 2 diabetes is because of the lifestyle. Type 1 diabetes is a genetic disorder. Type 2 diabetes is because of the lifestyle of the person, which is reversible if the lifestyle will be corrected. So when glucose level increases in the blood, insulin prime function is to trigger the cells and liver to absorb the extra glucose. Right opposite is what is function of hormone glucagon. So glucagon is released when the glucose level in the blood is low, especially between the meals or when you are waking up in the morning or during the period of fastings. Also, glucagon is released when body needs more energy, that is during a stressful situation or a fight and flight situation, or when you are doing an intense physical activity. So that time pancreas release glucagon. तो glucagon का जो आपका prime function है, that is glucagon, it triggers the liver to convert glycogen, जो glycogen इंसुलिन ने स्टोर किया था in liver. So it tells liver to convert glycogen back into glucose. And second is it tells the fat cells or adipose tissues that blood में glucose level is very low, so we need some other form of energy, and it tells adipose tissues to break down the stored fats. I hope the functions of insulin and glucagon is crystal clear to you.